मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बांधे कार को नो बिया यूएनएचसीआर दा कार नीचे बा पे एजुकेशन बांधे आईडीपीज एजुकेशन बांधे कार कई यूनिसेफ एजुकेशन बांधे कार कई थ्रू आउट ठीक शो यूएनडीपी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बांधे कार कई नो दा से डेर ऑर्गेनाइजेशंस बिया चे सेग्रीगेट शिविली पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स बांधे कार कई cuts across organizational line, they need varied skills of different professions. और your project के चिकम different कसान involved भी अगर different variety of skills राजी है सर फर्स्ट का finance वाला भी procurement वाला भी budgeting वाला भी human resource भी that basically a skillful कसान भी देखिए basically uncertainties involved भी like new technology external environment can change the character of a project न्यू टेक्नोलॉजी रावला फर्स्ट का मुंगा पा यो प्रोजेक्ट तो पा हायर एजुकेशन माने की दो अबे एकदम कोविड रावलो कोविड बांधे द न्यू टेक्नोलॉजीज रावल एलएमएस रावलो नो दा शिजुना अनसर्टेनिटीज क्रिएट की प्रोजेक्ट डिले की या प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल साइड थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज प्रोसीजर द गवर्नमेंट चेंज वन नो अगम इम्पैक्ट कई प्रोजेक्ट नो दागे दलासा बेसिकली या अनसर्टेनिटीज क्रिएट की personnel materials facilities are temporarily assembled to accomplish a goal within a specified time frame and then disbanded. उस implies the materials, the facilities, the different facilities, which are temporarily assembled to accomplish a goal. The project basically will temporarily. First, your the project yaad ka mada abhi wala the सैलाब रावले द सैलाब द पारा द सैलाब ज़रकान द पारा दी कुरुनो जोड़ो कुरुनो द पारा दा चिकम पर्सनल मटेरियल्स दा चीज़ों गश्तली शेवी that all temporarily ज़के चे प्रोजेक्ट के चिते इन्वॉल्व शे प्रोजेक्ट खत्म शो नो एम्प्लॉइज हम खत्म लगावी कुरुनो तलाशी ज़के दा पदा टेके वाले हिसाब भी नो दा टूल चे टाइम फ्रेम भी दा चे सुमरा टाइम फ्रेम की देकार की उम्मीद की दई खपल चीज़ों खपल गोल्स accomplish किया in a specified time frame then they can go to home. उस देखिए यो बला खबर पाकिस्तान के दाशिज़म प्रैक्टिस की नोट दुनिया की होमम जो सो कंट्रीज की लिया दी चिफर्स का तासो प्रोजेक्ट द पारा कसान वावश तला का प्रोजेक्ट कसान बेसिकली दे फल द ऑर्गेनाइजेशन उनकी नो का ऑर्गेनाइजेशन ने की दई बेसिकली सैलरीज द बाहर नशी मुझे सैलरीज द बाहर नशी दई बेसिकली जो प्रोजेक्ट खत्म शी दई वापस फल ऑर्गेनाइजेशन तराशी द ऑर्गेनाइजेशन पर पेरोल बांधी No da yo practice ki gi del tali gaya deshi kam valid varta vele shei bas kasano da para valid de bas kasano da para invalid de wo basically project da vi che anita so da bahar na kasan wale yo bahar na laka outsourcing ho gayi upon finish a project releases lot of resources which were engaged in execution of a project no da basically their resources engaged ki gi dekhi खुद आगे रिपोर्टिंग हम भी प्रोजेक्ट खत्म शी आगे रिपोर्टिंग हम भी और रिपोर्टिंग डिफरेंट मेथड्स दी अब हम मख की इंशाल्लाह प्रोजेक्ट की हुई बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट से शेयर द प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स वो प्रोजेक्ट थे दावे लका आगा दे यूएनडीपी प्रोजेक्ट थे फर्स्ट स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर बांधे दे नो आगा
financial aspects. Social cost benefit characteristic. Large project impacts the equilibrium of society. Carefully evaluation of the sacrifice of society will make and benefit that will occur have to be done. Us tikta social cost benefit taraf tarashi. Social cost benefit ke tikta tasu puruna jod kali temporarily jod kali ya permanent jod kali permanent shelter in falko ta jod kali. No temporarily kis social cost benefit of permanent issue. Basically, the temporarily cost benefit bialdi or the permanent bialdi. For padai tuano bandi kata siyo time ke number ke nupavi bandi time frame number ke padi bandi isim jate legi. No ka budget increase ki no different attributes ki chestaso project ke involved thi. Sir. Feasibility and project appraisal. Simple as that. तासो चिकलम प्रोजेक्ट का वही दावे feasibility report जोड़ेगी. Feasibility report मतलब दावी यानी वो ज़ेर की तासो लार्ज शेई फर्स्ट कई सैलाब रागले और नौखार न शुरू शेई तर लगा वापस दिखा सजे पूरा शेई में that whole area affected हुआ. उस दिल तदादे चिड़े NGOs के लिए feasibility report जोड़ कर चियारा सुमरा कसान दी सुमरा shelter पकार दी सिसी चीज़ों न पकार दी need assessment पकार दी. नुद्दा चीज़ों न basically da shizuna basically dear importantly the project the para the project appraisal the para chiara ta so feasibility report jod kadi ya eta aksar the NGOs wala need assessment hui. Basically project kasse da para de yani ta so kasse apply kawai li kya the construction da para kawai ta so kawai the training and development da para ta so kawai li kya the education da para khud aage feasibility report more sar attach kawai basically ta so goals award ka project ki and what is now in that project. No, that is important that chiara ta so feasibility report mahkina chod kadi bi ka feasibility report ne bhi then you have to be much more curious about chida project pa mata milavi yo kada milavi. No, informal and cursory treatment should be replaced by systematic and sound evaluation techniques. तासे चलिए कि कम टेक्निक से इन्वॉल्व कवई दिया ही है अगर टेर इम्पोर्टेंट दिखे अगर लगा क्वांटिफाइबल भी अगर बल तम कथा से वही अगर बल पे उमम यकीन होगी that is important दिखे need assessment शवे दिया feasibility report जोड़े शवे दिया कम basis पानी जोड़े शवे दिया your project definitions as per to Project Management Institute PMI chikam standardized procedure de a project is not is a one shot time limited goal directed major undertaking requiring the commitment of varied skill and resources. Basically taso that basically project be one shot yani one time be the project Kedeshi pilot study that increased agita pilot study na implementation stage tarashi o tasu ta large scale bani milaushi. So basically ko pilot study diya ka large scale bani de no basically dwana tasu ta one shot project de yani ta one time de ta basically we were time limited but we yani duration with the pretty first ka yokal la para spagmash da para goal directed be yara ave ki tasu ta milestone dar kadi shi yara dada shizuna pool di da pa ushi mumba tasu evaluation ko a major undertaking dekhi like MOU sign ki the dwano departments ya the dwano organizations requiring the commitment of varied skills and resources. Basically tasu ta human resource pakar de as per to your scope of the project. First ka the construction related kasan pakar de the para expertise pal pakar di kada education ne da education pal expertise pakar di that basically different characteristic involved she is as a project ki one definition basically will show you project management kitab ki it also describe a project as a combination of human and non-human resources pooled together in temporary organization to achieve specific purpose.
دینه پهلا ما یو خبر وکړه چې یاره تاسو ټول راغونډي ریسورسز چې هغه هیومن دي هغه نان هیومن دي in a temporary organization in context to تاسو project work کو project ختم شو that's it لکه تاسو خپل سایت ته ځئ موږ خپل سایت ته او in case تاسو بل project لپاره اپلای نه ویګړي یا project extension نه ملاو شوی نو دا basically دا different criteria دي characteristic of a project دینه پهلا موږ خبره وکړه چې project is a big work. Basically, it is a work, one whole thing. There are contribution from many different people. Special feature that will distinguish a project from any ongoing activity, for example, production, are summarized below. Objectives, basically the projects we fix at once achieved, the project ceases to exist. Yours and also execute no implementation osho the evaluation osho assessment osho kisa khatma the whole lifespan chikam de the project has to end project par basically aga end ki aga the program honte characteristic ta ne de cannot go on endlessly the program the UN katasa program gore aga sustainable development goals ki The Sustainable Development Goals basically introduced Chevidi first kai taso go 2005-2004 ki no agar tar usa pure la compact ki program man di lagya di so basically dakhil small project di che khalke kai liya di no da project characteristic yo da de shida ba end ki dal pakar di special features ki di the single entity we take the main responsibility lies with the project manager. Teamwork they call for teamwork like first the project tuni walo different departments there are different kasan involved shipave even procurement managers ya procurement wala logistic wala finance wala that tool involved shiki uniqueness da life cycle bi da growth bi maturity decline bi khatam shi uniqueness sir no two projects are exactly g the team chiri the project team chiri nu de ke workers razi kana sirf administration wali narazi na team matlab laka overall laka stada manager na shuru se tar workers pori that tool yo aligned kar kai to de ke dane she wele che da exclude ke de shi na zaka kata laka ahi exclude kal no the team kar se sho gaya like a tip that your higher authority nasta the project evagas to kolo wala for workers di sahi sho sahi hai thank you uniqueness like da chita se kam project dar kade she da bal chata bana work kadi ki like da exist kaina exactly similar change change due to environmental factors or technology project sees many changes. Different project is like the UN project the UN project there different change due to technological perspectives. Yeah, the government rules and regulation policies nan sab days ya change ki liya di no der ziyad khalka pade bande kai ka kai liya di chera the environmental factors der ziyad ki data no that challenges your project manager da para ya yo NGO da para या UN da para chi bai da barriers khatmul di no da she ya project failure ta chizi no da basically maqsad hum da ka environmental factors di no da didn't matter kai da she dia special features ke dam include di bai successive principle details of a project are revealed as a project progressive over time made to order always made to order of the customer perspective na kar kai unity in a diversity interrelated set of activity but diverse basically interrelated activities we for diverse we first ke finance wala kal kar kai li gayi HR wala kal kar kai li gayi workers kal kar kai li gayi that different set of activities ho interrelated di for diversity
نو دا لکه as per to teamwork کدا نوی نو project succession نوی high level of subcontracting اوس د کې ډېر NGOs د کې انوالو دي چې هغه subcontracting ورکوي سب کانټراکټینګ مطلب هغه آوټ سورس کی ډیفرنٹ شیزونه لکه فرض کې را مټیریل دی هغه نشي اغشته یا پروکیورمنٹ دی هغه نشي کوله یا لاجستیک دی هغه نشي کوله ځکه لاجستیک لپاره خپل اس او پیز پکار دی فرض کې ټرک پکار دی نو دا چا سره غنی وي نو هغه دا آوټ سورس کی دا هغه پټیکا باندې ورکی نو دای کې دا شیزونه شته چې هغه هاي لیول اف سب کانټراکټینګ دی ریسک اینڈ انسرټینټیز دی کې هم انوالو دي Every project has risk and uncertainty. Defined projects will have high degree of risk. Usti implementation side ta zaino da hi ya der risk vi. Khuda de che risk kamolo da para there different factors zi. Khunnan saba Pakistan ki che ogore no laka tolo ke gut factor data rules and regulation the policies thi. دا پالیسی چې تر څو پورې یا سټیبل شوی نه وي نو زمانه د خیال چې لکه سکسیشن سایت ته ډېر کم NGOs داسې دي چې هغه سکسیشن سایت ته ځي ریزن دا دی چې هغه ویل اسټابلیشډ NGOs دي او هغوی سره کم از کم جیب کې څه نه څه لکه انویسټمنټ پروت دی چې هغوی سکسیشن سایت ته لاړ شي پروجیکټ فیملی ټری بیسیکلی basically پاگی کی راضی پلان نیشنل پلان فار گروتھ یا کارپوریٹ پلانز پاگی کے پروگرامز راضی بیا چې health education infrastructure development etc etc projects کے بیا دا سے وڑو کے project power plant project یا school دے یا hospital rebuilding دے یا hospitals کے equipment provide کول دی یا housing دے roads دی نو در different چیزونا انوالو دی په پروجیکټ کې ورک پیکیج مطلب چې واټر سپلای یا ډیسټریبیوشن یا پاور ډیسټریبیوشن یا لاجستیک ډیسټریبیوشن یا پروکیورمنٹ چې کوم تاسو کړی دی هغه ډیسټریبیوشن دا بیسیکلی ورک پیکیجز کې انوالو دي ټاسک بیسیکلی اوارډ اف کانټراکټ چې کانټراکټ تاسو ته اوارډ شو دا بیسیکلی ټاسک ته او دا کول دي دا اچیو کول دي ایکټیویټیز بیا په ټاسک کې واړه ایکټیویټیز دي لکه فرض کړئ تاسو یو کور جوړوئ په کور جوړولو کې ایکسکیویشن دی لایینګ اف کیبلز دی ریپیر ډرایینګز دي دا هغې یو نقشه جوړول دي نو دا ډفرنٹ ایکټیویټیز انوالو دي په هغې کې ورکرز کار دی نو دا بیسیکلی یو پروجیکټ فیملی ټری ده دا په هر هغې کې ارګنایزیشنز کې دا شیزونه اویلیبل دي types of projects یا داغه parameters دي جیو سپریډ دی نېشنل یا انټرنیشنل پروجیکټس دي سیکټوریل دی تاسو سره انډستریل یا نان انډستریل دي ټیکنالوژي بیس راځي تاسو سره نان کنونشنل یا هائی ټیک یا کنونشنل ټیکنالوژي یا لو ټیک نن سبا دا بگ ډیټا باندې AI باندې ماشین لرنینګ باندې خلک کار کوي دي دو پاکستان ډیولپینګ سټیج کې دی نو په دې باندې دومره کار نشته خو بیسیکلی کار سٹارٹ شوی دی یو یونیورسٹی دا آئی تھنک ہزارہ کی جوڑی کے لیے گیا ٹول آئی تھنک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ یونیورسٹی جوڑی کے لیے گیا ټولو کې غټه پاکستان نو شتا ډیر شیزونه داسې دي چې لکه چینج کېږي لګیا دي نان کنونشنل یا اپډیټډ شیزونه سایډ ته راځي لګیا د هغې سایز میټر کوي چې یاره میګا سایز دی میجر دی یا میډیم دی یا مینی دی نو میګا وي ټولو کې غټ پروجیکټ یا نیشنل پلان باندې چې څنګه دی کارونه کوي کېږي نو میجر وي پلانینګ به وي یا پروګرام به وي یا میډیم وي پروجیکټ به یا مینی د هغې سپیسیفک یو سیګمنټ باندې به کار کېږي نیو اور ایگزسټینګ بیسیکلی نیو پروجیکټ ته هم اپلای کولی شي ایگزسټینګ مطلب چې دا څنګه یا وي بیسیکلی په ګراس روټ لیول باندې یا ایکسپانشن لیول باندې یا موډیفیکیشن لیول باندې دا کېږي دواړه ایگزسټینګ دا وي چې یو NGO فیل شو نو د هغې نه یو پروجیکټ واخیستلی چې بل لی ورکړي په پهلنۍ ایویلیشن کې یا دویم ایویلیشن کې فیل شو بل لی ورکړي نو دا بیسیکلی یا ایگزسټینګ ځای کې څه بل څه کار کول وي فرض کړه ډیولپمنټ شو
da education da para ka da sizuna matter kai interlink क्लास में स्टार्ट थे या trade off resources versus time no da basically matter kai da parameter zaka che ya normal भी या crash की या disaster भी पागे सही है no matter kai zaka che resources maybe or resources भी और time maybe ध्यान ने की मतलब दोनों बैलेंस चलेगी हमेशा दे यो एग्जांपल बता से जमा के दर को और पदे बांधी यो कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट पनुम बांधी यो terminology from history with the books ki no time basically constraint the resource hum constraint the no da constraint ka kamawai no project success ya project performance zyati ki kada zyati ki itni performance kami गिर जाती है trade off versus time chasing ma tasu sare khabar ho normal भी या crash ही normal basically adequate time is allowed for implementation all stages are allowed such as such time duration that will or they would normally require यो आम प्रोजेक्ट चली गया दे टिक द स्टार्ट किया नॉर्मल लगा देना होगा पर सफिशिएंट टाइम इंप्लीमेंटेशन द पर फर्स्ट की कास ले यो काल दर करे तास द पता चला कि दशक को मैच तो के कम कंसिस्टेंट का खुदा से खत्मी या दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर मिनिमम कैपिटल कॉस्ट एंड नो सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मुतास द पता है कि यानी सलाह प्रावले और डेढ़ रंजो का किताब सुन करी जारी क्वालिटी कार ने लेकर को डेढ़ दा सीधी जी गया था सुदाम मिले सीधी तो क्वालिटी कार छे वेरे तो क्वालिटी कार लगा मतलब दाने छे अब तरो सपोरे बेइज्जती के लिए क्या दियो सो बेसेट को मा जमा समझ खाली और गुजरे काला माफ के मागे चार सदा की बयान पड़ी मुंगा यानी कम से कम पता रहा लगे दिलो छे इसका उसमस्ता क्रैश मतलब जी जी सर रिसोर्स वर्सेस टाइम इसका कुछ समझ नहीं है भाई रिसोर्स वर्सेस टाइम रिसोर्स आपके पास हो टाइम ना हो ड्यूरेशन ना हो इन दोनों का आपस में लिंक है रिसोर्सेज आपके पास है टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास तब भी आप कैसे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे कैसे रिसोर्सेज को यानी इंप्लीमेंट करवाएंगे और अगर टाइम आपके पास ज्यादा है रिसोर्सेज कम है तो तब आप कैसे करवाएंगे यानी ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ये कंस्ट्रेंट भी है और अगर इन दोनों पे काम किया जाए इस बैरियर को खत्म किया जाए तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ही इंक्रीज होगी समझ आ गई है yes. एक आपके पास रिसोर्सेज हैं आप आ सकते हैं यानी फर्ज करें आपके पास गाड़ी है आप 4 सदस्य से डिग्री के लिए आ सकते हैं आबासी यूनिवर्सिटी लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप आ सकते हैं रिसोर्सेज तो चलो ठीक है गाड़ी का मैं क्या करूं जब मेरे पास टाइम नहीं मैं डिग्री को टाइम नहीं ले सकता और ठीक है अगर आपके पास टाइम है चले आपके पास टाइम है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है आने के लिए तो आप आ सकते हैं तो दोनों साइड पे आप देखें तो आप इंपैक्ट आपको ही होगा नुकसान आपका होगा तो इसी तरह नुकसान आपके प्रोजेक्ट सक्सेस का भी होता है आपके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का भी होता है तो दोनों का होना ये बास टाइम पे दोनों को एज अ कंस्ट्रेंट समझ के दोनों को डिक्रीज करना ये बेसिकली अगर आप इन दोनों पे वर्कआउट करते हो इनको डिक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि नॉर्मल है आपके पास नॉर्मल टाइमिंग्स होती है आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग होती है या सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं आप कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा लेकिन बास टाइम पे क्रैश साइट होते हैं अब फर्ज करें सैलाब आ गया क्रैश साइट है भाई कुछ ना कुछ तो करना है इमीडिएट अगर कुछ ना कुछ इमीडिएट ना किया गया तो लोगों का नुकसान होना बेसिकली एनजीओ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए काम कर रही है ये बेसिकली क्रैश साइट होते हैं अगर क्रैश साइट से आप लोग निकल जाते हो डिजास्टर वाले उस पे चले जाते हो फर्ज करें डिजास्टर आ जाता सैलाब के साथ ये चीजें भी आई हैं कि भाई लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ लोगों के माल को भी मवेशियों को भी नुकसान हुआ तो ये बेसिकली फिर वहां पे आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जैसे कि अब ये डिजास्टर आया वो कोविड का तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट या नेशनल एक्शन प्लान होता है या प्लानिंग होती है प्रोग्राम्स बन जाते हैं भाई कि कैसे हमें रिएक्ट करना कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है तो ये बेसिकली डिफरेंट चीजें होती हैं कि आपके टाइम वर्सेस रिसोर्स वर्सेस टाइम के साथ ये लिंक्ड होती है भाई आपके पास डिजास्टर होता आपके पास टाइम नहीं होता
आपके पास रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, आपने कोई प्लानिंग इस किस्म की बनानी है कि भाई उसको खत्म कर जाए अपने प्रोजेक्ट को। और अगर आपके पास क्रैश है तो क्रैश के भी अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं भाई कि आपके पास ठीक है या फर्ज करें टाइम है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं आपके पास टाइम नहीं है, तो उसमें आप कैसे बिहेव करेंगे। नॉर्मल में तो चलो आपके पास चलो दोनों चीजें हैं, रिसोर्सेज भी है, टाइम भी है, आपको पता है कि भाई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मैंने कर लेना। लेकिन क्रैश साइड पे या डिजास्टर में आप कैसे बिहेव करेंगे। Project life cycle phases basically conception, definition, planning and organizing, implementation, cleanup या आप उसको closing कह सकते हैं। इसको ही हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसी पे सारी हमारी डिस्कशन होगी, सारे हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी कि भाई कंसेप्शन क्या चीज है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है और क्लोजिंग होती है। लेकिन कंसेप्शन के डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, डेफिनेशन प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट डिफाइन की अलग स्कोप है, कैसे स्कोप को डिफाइन किया जाता है, प्लानिंग एक अलग टॉपिक है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है और क्लोजिंग एक अलग है, कैसे आपकी क्लोजिंग में एवेल्यूएशन होती है और कैसे चीजों को आप सॉर्ट आउट करते हैं। कंसेप्शन में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जर्मिनाइजेशन या जर्मिनेशन ऑफ आइडियाज, आप कैसे इन्वॉल्व करते हो आइडियाज को, कंसिडर ऑल आइडियाज विदाउट वरीइंग अबाउट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स या फर्स्ट फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, आप कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। डेफिनेशन फेज पे आपके पास आ जाता है आइडिया इज फर्दर डेवलप, कैसे करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है, प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने कहा कि नीड असेसमेंट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इफ नॉट डन प्रॉपर्ली रिस्क में इंक्रीज, अगर वो आपने ठीक नहीं किया तो रिस्क इंक्रीज होगा। Often it is repeated during the course of raising fund for the project, ये एक रिपीटेड टास्क होता है कि आपने अगर रिपीट किया तो सक्सेशन की तरफ आप लोग जाते हैं। अच्छा, planning and organizing phase, this can effectively start only after a definition phase is over, but in effect it starts after the conception phase, also overlap with definition and implementation phase so much that proper recognition to this phase is not granted. अब प्लानिंग फेज होती है आपके पास या ऑर्गेनाइजिंग फेज होती है, आपने प्रॉपर प्लानिंग कर दिया, आपने प्रॉपरली उसको वेल डिफाइन कर दिया, उसके स्कोप्स डिफाइन कर दिए हैं, आपको पता है कि भाई मैंने इसको फिर आगे लेके जाके ऑर्गेनाइज भी करना है, ठीक है, फर्स्ट करें उसके बजट कितना, ह्यूमन रिसोर्स कितना लगता है, प्रोक्योरमेंट कितनी लगती है, तो वेल या मैन पावर कितना लगता है, ये वेल डिफाइंड चीज होती है, इंटरलिंक्ड होती है। अगर ये आपने प्लानिंग भी आपने आउट क्लास कर दिया बेस्ड ऑन योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो आप नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हो। कैसे है इंप्लीमेंटेशन फेज, प्रोजेक्ट या इंप्लीमेंटेशन फेज पे, इंप्लीमेंटेशन फेज में अच्छा पछतो implementation phase के basically that is involved भी जे तासो project planning को organize को तासो problem define को feasibility report जो को नदागी ना बस तासो implementation ची भाई the project for reality के हम exist कई बार नो तासो basically the budget ची तासो ला यो NGO दर की या तासो ला यो donor agency दर की तासो बदा लगा वही first कई taso le PC darpre da avega para shelters da para सैलाब के या कोविड के वैक्सीन्स da para no taso da implement का वही implementation के बाद आप PC लगा वही da के evaluation बका वही भाई जल्ला घूमा ले गया हम no da वसीला लगी बिया पागे कि दो डिफरेंट कास्ट राजी भाई तासो प्रोजेक्ट वाले सुमरा लगा वही तासो स्टाफ वाले सुमरा लगा वही no that basically differ kain and saba pa hari NGO ki sometimes halka wali kya di 80-20 yani 80% pamunga pa age mande lago 20% zamunga budget pe fal the office zakati age da para humum se paise pakari no that budget ki include shevi almost
او بیس نن سبا لکه باز وایي چې 75 25 باز وایي 80 85 15 نو دا بیسیکلی تاسو باندې ډیپند کوي او تاسو پروجیکټ باندې ډیپند کوي. All techniques of project management are applied to avoid cost and time overrun. Yeah, requires high degree of coordination. Project life cycle phases project cleanup या closing के साथ monitoring and evaluation की तासो की कम implementation करी हुई कम शेजुना तासो implement करी हुई आगा basically राजी या donor agency राजी या चिचाना project अगस्ती फर्स्ट के USAID दे या UNHCR दे तो अगली फल monitoring and evaluation करी थी monitoring कई बड़ी सी दा कम documents तासो मुंगता provide करी थी या दा कारून अशवी दी दा reality के exist कई हमों का ना that existence taso evaluation z at least 90%, 93%, 100% depending upon your own performance kada shizu na nabi no taso evaluation negative ji taso level project de na lage the satisfactory results ta para taso pal humam lagai evaluation bakawai do kisme evaluation bi yo pal NGO pal kai li gai o yo donor agency kai no taso pal evaluation मैटर कई तासो evaluation टेक ने भी तासो सर एक्सपर्ट ओपिनियंस ने भी नो तासो प्रोजेक्ट लाडो आगे तरफ था फेल्योर तरफ था और तासो evaluation टेक भी तासो क्लोजिंग द पार्ट तासो पल चिकम डॉक्यूमेंटेशन दी द क्लोज अप स्टेज अगर चिकम तासो डोनर एजेंसी आनो का बिया प्रोवाइड कोई अगर 100% भी तासो evaluation बिया चिकीगी न तासो evaluation के दुमरा मसले ने भी ځکه چې تاسو خپل د هغې سټانډرډز فالو کړي دي او تاسو د هغې د سټانډرډز فالو کوي او تاسو دا کار وکړئ نو ایټ لیست دې کې لکه سیټسفیکټري ریزلټس وي نو دا ستاسو کلین اپ سټیج و انشاءالله نیکسٹ کلاس کې به کانسپټس آف پروجیکټ مینجمنټ وایي نو نیکسٹ کلاس کې انشاءالله دا شیزونه به ډسکس کوو نو سی آر چې څوک دی اټلیسټ ما ته رایاد کړي چې یاره پروجیکټ لایف سایکل پورې شوی क्लास और तासो का सवाल भी न कोलिशन